Okay. So this is October-November 2024, paper 2, variant 3. अच्छा जी. Question number 1 says figure 1.1 shows the structure of the human gas exchange system. Part A, use the letters in figure 1.1 to identify the parts of the gas exchange system that contain cartilage. Now let's first start with labeling this diagram. Now this over here would be either pharynx or larynx. Most probably this would be pharynx, and then we would have the trachea. This is your bronchus. These are your terminal bronchioles. E is your respiratory bronchioles. F would be alveolar duct, or they can also be respiratory bronchioles, interchangeable. And G is your alveolar sac. Use letters to tell which part of the gas exchange system contains cartilage. So we know that the cartilage is present in the trachea and the bronchus. So we would simply say B and C. Okay, describe the role of cartilage in the gas exchange system. Now, the role of cartilage is this is basically winter 24, paper 2, variant 3, Adina. Okay, describe the role of cartilage in the gas exchange system. Now, cartilage is a soft bone. It ensures कि जो आपके क्या कहते हैं गैस एक्सचेंज डक्ट्स हैं दे आर ओपन. आपका जो ट्रैकिया है, आपका जो क्या कहते हैं ब्रोंकस है, इनमें क्या कहते हैं एयर प्रेशर की वजह से दे डोंट कोलैप्स. सो दीज cartilages ensure कि हमारे पास जो airways हैं they stay open, they do not collapse. And also I always say that when you're trying to understand how a cartilage is like or what a cartilage is like, you should feel the air flap. आपका जो एयर फ्लैप है, जो आपका क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द एयर है, दैट इज बेसिकली कार्टिलेज. योर एयर इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. तो कार्टिलेज जो है, अगर आप अपने एयर को फील करो, इट्स एक्चुअली अ सॉफ्ट बोन. कार्टिलेज इज डिफाइंड एज अ सॉफ्ट बोन. तो आपके पास क्या कहते हैं जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं इन कंपैरिजन टू योर हार्ड बोन्स, ये फ्लेक्सिबल होती हैं. तो इनका फ्लेक्सिबल होने का फायदा ये है कि जब एयर एंटर्स इनसाइड द एयरवेज जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, तो हमारे पास वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी. हमारे पास जो हमारा एयर वे है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, वो लेंथन भी हो सकता है, वो वाइडन भी हो सकता है व्हेन वी आर टेकिंग इन एयर. सो कार्टिलेज keeps the airways open, preventing them from collapse. They are also flexible in nature, thus allow the widening of airways during inhalation. Microscope slides were prepared from two regions of the gas exchange system. Figure 1.2 and figure 1.3 are photomicrographs of the two slides. Complete table 1.1 to identify the regions of the gas exchange systems from which the two slides were prepared. Identify one feature visible in figure 1.2 and one feature visible in figure 1.3. State one way in which each feature relates to its function. Okay. Let's identify कि हमारे पास कौन से एरिया से ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स ली गई हो. तो आपको जब भी क्या कहते हैं गैप्स नजर आए, वो जो गैप्स होती हैं वो आपके एयर स्पेसेस या एल्व्यूलर स्पेसेस होती हैं. सो दीज आर बेसिकली योर एल्व्यूलर स्पेसेस. तो जहां पर भी आपको ये हॉलो स्पेसेस नजर आएंगी, वो कौन सा एरिया होगा, वो आपका एल्व्यूलाई वाला एरिया होगा, जहां पे आपको कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, गैप्स नजर आ रहे हैं. दैट इज बेसिकली द एयर स्पेस, द एल्व्यूलर स्पेस. और आप देख सकते हो कि हमारे पास, अगर मैं एयर स्पेस को एक जूम इन करूं, तो आपको नजर ये आ रहा है कि हमारे पास एक वन सेल थिक एपिथेलियम है.
एंड ऑल्सो आपको थोड़े थोड़े क्या कहते हैं, जो ये डार्क क्या कहते हैं सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर आरबीसीज। तो हमारे पास वी नो दैट हमारा जो एल्व्यूलर एपिथेलियम है इट इज कंटिन्यूअस विद द capillaries. तो हमारे पास the reason why we are able to identify this structure as the alveoli or the alveolar sac, it is because हमें alveolar air spaces नजर आ रही हैं जहाँ पर diffusion of gases take place करता है। and we can also see क्या कहते हैं red blood cells स्पेसिफिकली कैपिलरीज वाले, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं दे कैन चेंज देयर शेप्स इनटू बेल शेप्ड, थोड़े से वो क्या कहते हैं फ्लैटेंड हो जाते हैं अपने बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप से। सो वी कैन सी दी आरबीसीज एंड वी कैन सी द एयर स्पेसेस एंड हेंस वी कैन से कि ये वाला कौन सा एरिया है, हमारा एल्व्यूलाई वाला एरिया। तो हमारे पास एल्व्यूलाई कौन सा था, हमारे पास जी को वी वर कॉलिंग कि जी हमारे पास जो है दैट वाज द लेबल फॉर alveoli. So this figure 1.2 is basically the G region of the gas exchange system. One visible feature, हम one visible feature में air spaces की बात कर सकते हैं, one cell thick epithelium की बात कर सकते हैं, हम blood supply की बात कर सकते हैं because RBCs are visible. So any of the three you can mention. I would suggest कि air spaces सबसे ज़्यादा visible चीज़ है, so we can mention that. एंड हमारे पास हमने इस फीचर को रिलेट करना है उसके फंक्शन से, तो एयर स्पेसेस इज बेसिकली द एरिया वेयर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो द surface across which gas exchange takes प्लेस। अगर हम रेड ब्लड सेल्स मेंशन करते हैं कि हमें रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, कैपिलरी नजर आ रही है, तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास द रेड ब्लड सेल्स और द कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई इंश्योर्स कि जो डिफ्यूजन डिस्टेंस सॉरी जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है दैट इज बेसिकली मेंटेन्ड फॉर गैस एक्सचेंज। अगर हम 1.3 की बात करें, सो वी कैन सी द ciliated epithelium एंड वी कैन ऑल्सो सी गॉबलेट सेल्स, हमें गॉबलेट शेप सेल्स भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास वी हैव द गॉबलेट सेल्स, ये जो वाइन गॉबलेट जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम गॉबलेट सेल्स बुलाते हैं। सो वी कैन सी गॉबलेट सेल्स एज वेल। सो कैन यू गाइस टेल मी क्या हमारे पास गॉबलेट सेल्स और सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस एक्सचेंज सिस्टम में? या बेसिकली हम यहाँ पे ट्रैकिया भी लेबल कर सकते हैं, हम यहाँ पर ब्रोंकस भी लेबल कर सकते हैं। सो हमारे पास ट्रैकिया एंड ब्रोंकस वहां पर क्या कहते हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है। ब्रोंक्यूल्स में ciliated epithelium होता है, yes, but bronchioles do not have goblet cells. Goblet cells are basically present either in trachea or they're present in bronchus. ट्रैकिया और ब्रोंकस के अलावा कहीं पर भी क्या कहते हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो इन दिस केस आप बी या सी मेंशन कर सकते थे because goblet cells are present in trachea and bronchus. So it's up to you whether you want to label it as B or you want to label it as C. Both would have been an acceptable answer. सो बी और सी में से आप कोई एक मेंशन करोगे एंड यू वुड से दैट गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट, और आप गॉबलेट सेल्स का रोल लिखोगे कि हमारे पास जो गॉबलेट सेल्स होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द म्यूकस बाय सिक्रीटिंग द गॉबलेट बाय सिक्रीटिंग द ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन, secrete the glycoprotein mucin which makes up the mucus. Okay. There is a regular and efficient supply of blood from the heart to the lungs. Describe the sequence of events that occurs in the heart to make sure that there is a regular and efficient supply of blood to the lungs. हमारे पास heart से lungs में जो blood supply जा रही होती है वो basically through pulmonary circulation जा रही होती है। हमारे पास जो पूरा circulation का process है वो किस तरह से रेगुलेट हुआ हुआ होता है, वो कार्डियक साइकिल के थ्रू रेगुलेट हुआ हुआ होता है। हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो बेसिकली लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होता है। उसके लिए हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं विद इन द कार्डियक साइकिल टू इंश्योर दैट द ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, वी हैव टू राइट दैट डाउन। सो हमारे पास सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या चीज स्टिमुलेट करती है, हमारा साइनो एट्रियल नोड स्टिमुलेट करता है। सो वी वुड स्टार्ट ऑफ बाय मेंशनिंग हाउ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। सो वी वुड से साइनो एट्रियल नोड
in the right atrium produces electrical impulses which spread across both the atrium blood moves from atrium to ventricles via the tricuspid valve in the right side of the heart. The reason why I'm mentioning the right side of the heart is because वो हमसे पूछ रहे हैं heart to lungs blood कैसे जाता है, तो heart to lungs जो blood supply हो रही होती है वो through the right side हो रही होती है. The right ventricle receives the impulse from the AVN, or you can write the atrioventricular node, where the Purkinje tissue this result in ventricular contraction, thereby the blood is pumped from the ventricle to the pulmonary artery via the pulmonary valve. Okay. So next question. Stem cells are found in the human body. LGR5 plus stem cells are found in the lining of the small intestine. Figure 2.1 is a flowchart showing stages in the development of one of the daughter cells produced by the mitotic division of LGR5 plus stem cell. So we have the mitotic division of the stem cells. यहाँ पे हमारे पास mitosis हो रहा है, cytokinesis के थ्रू daughter cells बन रहे हैं. हमारे पास क्या कहती हैं? The daughter cells are further differentiating into different types of specialized cells. Now, the next question that follows is explain why stem cells are required in places such as the lining of the small intestine. हमारे पास जहां पर भी स्टेम सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स का क्या रोल होता है? दैट दे डिवाइड एंड देन दे डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, ताकि वो सेल्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के, उस पर्टिकुलर टिश्यू के डैमेज हो गए हैं, वर्न आउट हो गए हैं, उनको रिप्लेस किया जाए. इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिन्यूअल भी बुलाते हैं. तो एक ऑर्गन अपने आप को सेल्फ रिन्यू कैसे कर रहा होता है, सॉरी, स्टेम सेल्स अपने आप को सेल्फ रिन्यू कैसे कर रहे होते हैं कि वो अपना पहले माइटोसिस करती हैं. सम ऑफ द डॉटर सेल्स स्पेशलाइज इनटू सेल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू, और बाकी की जो डॉटर सेल्स होती हैं दे स्टे इन द फॉर्म ऑफ द स्टेम सेल्स, ताकि वी डू नॉट रन आउट ऑफ द स्टेम सेल स्टोर इन आवर बॉडी. सो we shall write that stem cells are responsible for replacing dead or worn out cells in tissues like the small intestine, as they are able to divide and differentiate into
different types of specialized cells. Name the stage of mitosis shown in cell X in figure 2.1. Can you guys tell me what is the stage of mitosis in cell X? Very good. It's anaphase. Why is it anaphase? Because sister chromatids are moving towards the opposite poles of the cell or opposite ends of the cell और उनके दरमियान क्या कहते हैं division हो चुका है. They have split apart. So X would be anaphase. State the part of the cell cycle shown at Y in figure 2.1. What would be Y? Right, it would be cytokinesis. Okay, explain the role of centromeres in the cell cycle. Now, centromeres, they hold together the sister chromatid. During the cell cycle, the sister chromatids attach themselves on the spindle via the kinetochores present on the centromere. Then during anaphase, हमारे पास the centromere divides, separating the sister chromatids, and therefore the sister chromatids are able to move towards the opposite ends of the spindle and then become genetically identical nuclei and then genetically identical daughter cells. So the centromere holds the sister chromatids together during metaphase. The chromosomes attach with the spindle via the kinetochores on the centromere. In anaphase, the centromere divides and the sister chromatids separate. Figure 2.2 shows three types of specialized cells that develop from LGR5 plus stem cells in the small intestine. We have cell P, we have cell Q, we have cell R. The structural features of a cell indicates its likely function. When they're talking about the structural features, they're asking us to focus on the number of organelles which are present in a cell. जिस भी organelle में जो जिस भी सेल में जो भी organelle सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा इसका मतलब है कि उस organelle से related function है उस particular cell का. So the structure always relates to a function of any cell. Suggest a function of each of the cells shown in figure 2.2 and explain how the structure of each cell supports your suggestion. Now we have to tell the function of cell P, Q and R और ये हम कैसे करेंगे जो भी ऑर्गेनियल या जो भी प्रोसेस हमें होता हुआ दिखाई दे रहा होगा सबसे ज्यादा किसी भी सेल में हम उसके थ्रू क्या कहते हैं अपने predictions record करेंगे of a particular cell. Now if you look at cell P में हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं? We can see the microvilli and we can see many mitochondria. तो हमारे पास comparatively to cell Q and R जो mitochondria की amount है वो बहुत ज्यादा है cell P में. So can you guys suggest कि ये small intestine के epithelium के cells हैं P, Q and R. So looking at P which has microvilli and large amount of mitochondria in its structure, what would be the likely function of cell P? किस चीज में सेल पी इन्वॉल्व होगा अगर बहुत ज्यादा माइक्रोविलाई हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उस सेल के अंदर. Very good. So cell P is very much likely to be involved in absorption क्योंकि microvilli present है. Microvilli increase the surface area to volume ratio of a cell, thereby facilitating the transport of food from the lumen of the small intestine into the epithelial cells.
प्लस हमारे पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक्टिवली हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द एपिथेलियल सेल। तो इनमें से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट अबाउट द माइक्रोविलाई। एब्जॉर्प्शन, you wrote transport of food. That's also correct, Alama. Basically, absorption of food, uptake of food, transport of food, they're all the same things. So yes, अगर आप diffusion of substances भी लिख देते वो भी सही होता। Cell Q, function and explanation. If we look at cell Q, we've seen cell Q, cell Q से similar structure हमने पढ़ा हुआ है हमारे syllabus में। What does cell Q look like? किस cell से similar है cell Q? It's similar to goblet cell. Now, हमारे पास can you all, if you guys could remember, goblet cell में हम कहते थे because goblet cell is involved in the production of glycoprotein mucin, तो उसमें Golgi body ज़्यादा होती है. If you can see, हमारे पास you guys can see Golgi body is present over here, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या कहती हैं, we can see के random membrane bound structures present हैं, और हमारे पास vesicles भी इस गोल्जी बॉडी से बन रही है। तो हमारे पास वी कैन से दैट हमारा जो लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन होता है ना उसमें भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहती हैं, mucus lining is also present throughout our gut. Gastrointestinal tract में mucus present होता है। तो हमारे पास we can say that the Golgi body is responsible for the formation of mucus, or it is responsible for the synthesis of the glycoprotein mucin. So secretion of mucus, Golgi body, allow the synthesis and packaging of mucin glycoprotein. Cell R function and explanation. Okay. Now cell R में हमें बहुत सारे RERs नजर आ रहे हैं. We can see RER and we can see a lot of vesicles. And ये जो vesicles हैं, इनका जो content है that is moving out. So can you guys suggest what would be the function of cell R if it has lots of RER and if it has a lot of vesicles and those vesicles are being moved out of the cell? Yeah, it would be releasing enzymes or it would be releasing proteins. So we would say that there is a presence of RER, abundant presence of RER and Golgi body, and vesicles are being produced. These vesicles would be containing proteins or enzymes which are being removed via exocytosis. So we can say secretion of enzymes. RER के aspects अगर हम लिखें, so RER would be involved in enzyme or protein synthesis. And if we talk with respect to the presence of abundant vesicles, so we can say vesicles containing enzymes fuse with cell surface membrane and are released via exocytosis. Okay. Question number 3. The 5 bases found in nucleic acids are described as nitrogenous organic compounds. There are 2 types of bases. Figure 3.1 shows the structure of the 5 bases. So they have shown us the structure of uracil, thymine, cytosine, adenine, and guanine.
State the name of the type of base that includes U, T, and C. So हमारे पास uracil, thymine, and cytosine are described as pyrimidines. State why it is not correct to say that all nucleic acids have five bases. Now, when we're saying nucleic acids, we have two types of nucleic acids, DNA and RNA. We know that DNA only has four bases, which are ATGC, and RNA has four bases, which are AUGC. Both the nucleic acids do not have five bases, and therefore we cannot say that all nucleic acids have five bases. So we would say each nucleic acid has four bases. Now, this is a rather interesting question. Figure 3.2 shows a stage in the replication of DNA. The circled part is enlarged in figure 3.3 to show the elongation of the DNA that is being synthesized. So इसका क्या कहते हैं enlarged version उन्होंने हमें show किया है figure 3.3 में. Now I would highlight the two DNA strands in different colors. हमारे पास एक जो DNA strand है, it is basically this, and the other DNA strand is basically this. ठीक है? And they've labeled the ends of each of them. 5 prime and 3 prime ends इन्होंने हमें label करके दिखाए हुए हैं. Okay. And then there is this nucleotide that is being added, and we know कि वो इसके साथ क्या कहते हैं hydrogen bonds form करेगा. Describe the sequence of events that occurs at the stage shown in figure 3.3 to extend the synthesized strand. हमारे पास ये जो strand है 5 prime to 3 prime वाला, ये synthesize हो रहा है. ये हमारा new strand बन रहा है और ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है. ठीक है. देयर आस्किंग कि हमारे पास ये जो हमें इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फिगर दिखाई भी है, इसमें क्या प्रोसेसेस या क्या स्टेप्स होने वाले हैं जिससे हमारा जो न्यू स्ट्रैंड है वो इलोंगेट होगा. तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास ये वाला जो है इट इज एन एक्टिवेटेड nucleotide. अच्छा, because they have told us, they have shown us the shapes of each of the bases, तो हमें ये भी क्या कहती हैं इन्फर करना होगा कि ये कौन सी वाली बेस है और ये कौन सी वाली बेस है. ना ये टू रिंग स्ट्रक्चर है, इट हैज टू बी अ प्यूरिन. सो लेट्स सी हमारे पास ये कौन सी वाली प्यूरिन है. NH2 is present in adenine. तो हमारे पास, if you guys can appreciate, हमारे पास over here we have adenine. एंड वी नो कि एडेनिन से आकर कौन सी बेस एसोसिएट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इट्स थाइमीन. एंड वी कैन also confirm this from the structure that they've shown. Let's see NH double bond O क्या present है हमारे पास थाइमीन में. So yes, NH double bond O is present in thymine. So we would say that an activated nucleotide which has the thymine base would form hydrogen bonds with the adenine nucleotide on the template strand. हमें पता है कि जो ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होती हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड में, दीज फॉस्फेट ग्रुप्स आर ब्रोकन और हाइड्रोलाइज, जिसकी वजह से क्या चीज रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है. एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग द न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. ठीक है. सो वी आर गोना राइट दैट एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड containing the thymine base would associate via hydrogen bond with the adenine nucleotide on the template strand. The two extra phosphate groups
of the activated nucleotide would be hydrolyzed to release energy, which shall be used in synthesizing the phosphodiester bonds between the adjacent nucleotides on the synthesizing strand to elongate it. Any questions? I'll tell you कि किस किस basis पे आपको marks मिलेंगे इस answer में. You would get a mark to mention कि हमारे पास activated nucleotide है, which contains the thymine base. So 1 mark here, 2 marks over here. We have to tell कि hydrogen bond के through वो associate होगा with the adenine nucleotide on the template strand would be your 4th mark. We've mentioned actually more than the required marking points. Phosphate groups would be hydrolyzed. That would get us our 5th marking point. And हमारे पास the nucleotide is added on the synthesizing strand, it would be our 6th marking point. Any questions about this question? Is it clear? Okay. The two strands in a molecule of DNA are described as anti-parallel. With reference to figure 3.2 and figure 3.3, state what is meant by anti-parallel and explain how the anti-parallel arrangement of the strand determines how new strands are synthesized. Now, we have to refer to figure 3.2 and figure 3.3. हमारे पास, if we look at these figure, both of them, we can see कि हमारे पास if one strand is running in the 5 prime to 3 prime direction, the other strand would be running in the 3 prime to 5 prime direction. So हमारे पास basically anti-parallel का मतलब ये है that the two strands are parallel, however their direction is opposite. So we talk about that. And हमारे पास क्या कहती हैं, if we look at the direction of replication, आप direction of replication को देखो तो हमारे पास क्या कहती हैं, the direction of replication is always from the 5 prime end to the 3 prime end. So we would say कि हमारे पास the replication or the elongation of the strands is always from the 5 prime to the 3 prime end. जिसकी वजह से हमारे पास एक strand जो होता है वो leading strand होता है, एक strand जो होता है वो lagging strand होता है. And the lagging strand would have the Okazaki fragments, which are then joined together by the DNA ligase. So these are again 3 to 4 marking points. We have to give 3 at least. So पहले we will explain what is meant by the term anti-parallel. Anti-parallel means that the two strands are parallel but run in opposite direction, which means one strand is 5 prime to 3 prime, whereas the other is 3 prime to 5 prime. The direction of replication, however, is from 5 prime to 3 prime end, due to which one strand is lagging and the other is the
लीडिंग स्ट्रैंड यू कैन मेंशन दिस इज बिकॉज ये वाले पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हो इट्स बिकॉज DNA polymerase moves in the 5 prime to 3 prime direction only. Okay. A student constructed a table to compare the structural features of a plant cell, a prokaryotic cell, and a virus. अच्छा जी. Complete table 6.1. So the prokaryotic cell wall is composed of peptidoglycan. Capsid is composed of capsomer proteins. Prokaryotic cell and the sizes of ribosomes. Prokaryotic cells have 70s ribosomes. Viruses. Now, viruses can only have DNA or RNA. They don't have both, so we would mention that. DNA/RNA लिख दो, or you can say DNA or RNA. Okay. The cholera bacterium releases a protein toxin called choleragen. The toxin causes the loss of chloride ions and water from epithelial cells into the lumen of the intestine. Figure 6.1 shows the events that occur in cells lining in the intestine when collagen binds to the membrane of one of these cells. So this is basically an epithelial cell. ठीक है ये आपका एक epithelial cell है ये उसकी cell membrane है. This is a receptor on the cell surface membrane. This is the lumen and this is the inside of the cell that I have drawn the boundary of. State one likely source of an outbreak of cholera. हमारे पास cholera outbreak जो होता है उसमें mode of transmission क्या होता है किस source के through cholera spread हो रहा होता है contaminated water. Very good. So just don't write water because water wouldn't get you a mark. You can say contaminated water या untreated water. उससे आपको mark मिल जाएगा. So we can say contaminated water or untreated sewage system. Okay. With reference to figure 6.1, state why collagen molecules are described as having quaternary structure. Now, again, हम collagen को देखें. They said collagen is basically a protein. Looking at collagen, they're asking us to suggest why does it have a quaternary structure. Can you guys tell me when do we define a protein as quaternary? क्या ऐसी quality होती है natural disaster here आप नहीं लिख सकते because natural disaster can be an earthquake, it can be a volcanic eruption as well. So natural disaster is a very vague term. It wouldn't get you a mark over there. So you have to be specific. We know that cholera basically transmits through the fecal oral route. तो या तो आप contaminated food consume कर रहे हो, contaminated water consume कर रहे हो, or you live near an untreated sewage system. So natural disaster won't get you a mark because it's not a very specific term in this particular case. Okay. So हमारे पास कोई भी प्रोटीन quaternary तभी होता है when it has more than one polypeptide chain. So हमारे पास more than one polypeptide chain होगी, so it would be considered as a quaternary protein. Collagen is made up of more than one polypeptide. State the type of cell membrane component that forms a receptor for collagen. We know कि हमारे पास जो glycoproteins होते हैं या glycolipids होते हैं, they basically act as the cell surface membrane receptors. So आप उनमें से कोई भी एक लिख दोगे, you will get your mark. Okay. The process by which chloride ions leave the epithelial cell requires energy. Name the phosphorylated nucleotide that is needed for this process. So, which
फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोराइलेटेड का मतलब ये होता है एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हो. So which molecule is defined as a phosphorylated or an activated nucleotide जिसकी एनर्जी हम यूज कर रहे होते हैं for cellular processes, for active processes? Right, ATP. ATP is defined as a modified phosphorylated or activated nucleotide. ठीक है. Actually, explain why water also moves from epithelial cells into the lumen of the intestine when collagen is present. Now, I'm assuming that you guys must have studied this entire mechanism in your O levels as well. O levels में बहुत डिटेल में ये पूरा process पढ़ाया जाता है. But even if you don't recall it from your O levels, if you observe over here, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास collagen आकर bind करता है with the cell surface membrane receptor. This binding basically triggers the movement of chloride ions outside of the cell and into the lumen. Now, when the chloride ions would enter the lumen, it would basically decrease the water potential of the lumen. And when the water potential of the lumen is decreased, तो हमारे पास क्या कहते हैं? Automatically the water would move outside of the cell via osmosis. So we would simply write that when chloride ions move out of epithelial cells, they decrease the water potential of the intestine lumen, due to which water moves out of the epithelial cells via osmosis. Is this clear? Any questions about this? Okay. T lymphocytes are produced in bone marrow and mature in the thymus gland. When mature T lymphocytes leave the thymus gland to travel throughout the body, they remain inactive inside organs such as spleen and lymph nodes until activated by the presence of antigens. Figure 5.1 shows what happens to two inactive T lymphocytes U1 and V1 in the presence of an antigen virus. Okay, let's see what is happening over here. तो हमारे पास क्या कहते हैं? We have a U1 T lymphocyte and we have a V1 T lymphocyte. Now what is happening is कि हमारे पास जो आपको ये छोटे से इस तरह के rhombus shape या diamond shape structures नजर आ रहे हैं, they are basically the viral antigens. And जो T lymphocytes हैं उनके ऊपर जो इस तरह के structures हमें नजर आ रहे हैं वो उनके basically receptors हैं. Now what happens is we can see कि हमारे पास T lymphocyte से आकर क्या कहते हैं viral antigen bind किया. And when the viral antigen binds to the T cell receptor, cells derived from U3 remain in spleen, lymph nodes, and circulation. तो हमारे पास क्या कहते हैं U1 था. U1 is basically in the presence of an antigen, it is getting activated. And when it is getting activated, तो हमारे पास वो दो चीजों में क्या कहते हैं split हो रहा है या evolve कर रहा है, U3 और U4. The U4 cells are releasing cell signaling molecules. Can you guys suggest कि ये जो cell signaling molecules release हो रहे हैं वो कौन से वाले होंगे? It might look pretty complicated, but we have studied these cell signaling molecules as a part of our syllabus. What do T cells secrete? ऐसा वो क्या secrete कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो humoral immune response है वो trigger हो रहा होता है?
साइटोकाइंस। नाउ डू यू गाइस रिमेम्बर, हम जब इम्यूनिटी पढ़ रहे होते हैं, तो इम्यूनिटी पढ़ते हुए हम क्या ड्रॉ कर रहे होते हैं, हमारे पास टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स के साथ क्या कहते हैं, टी सेल्स वुड गो बाइंड टू एन एंटीजन, उसके बाद क्या कहते हैं, क्लोनल एक्सपेंशन होती है। और क्लोनल एक्सपेंशन के बाद हमारे पास जब एक्टिवेट होते हैं, तो दो तरह के टी सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। एक वो होती हैं जो ड्यूरिंग दैट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपका वो क्या कहते हैं, साइटोकाइंस रिलीज कर रहे होंगे, और कुछ सेव हो जाते हैं एज द टी मेमोरी सेल्स। तो यहाँ पर भी they've made this question complicated, but it is the exact same diagram that we have studied as part of immunity. यहाँ पर बेसिकली जो U3 और U4 है, वो कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं है। They're simply, this is basically the T memory cell. The T memory cell would stay in spleen, lymph nodes, and circulation. It's not going anywhere. It is going to be stored, and it would stay in the circulation as a memory cell. एंड ऑन द कॉन्ट्री जो U4 है हमारे पास, ये वो टी सेल्स हैं जो कि क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। एंड इफ वी लुक एट द फ्लो चार्ट फॉर द V1 टी सेल्स एज वेल, हमारे पास अगेन द एंटीजन इज बाइंडिंग टू आवर टी लिम्फोसाइट। हमारे पास एंटीजन और डी लिम्फोसाइट का क्या कहते हैं, बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगेन हमारे पास ये बेसिकली मेमोरी सेल्स होंगे, और ये हमारे पास इस पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स में जो सेल्स यूटिलाइज हो रहे होंगे, ये वो सेल्स हैं। नाउ देयर अटैचिंग देमसेल्व्स टू इन्फेक्टेड सेल्स। ना हमारे पास कौन से टी सेल्स होते हैं जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, और कौन से टी सेल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स के साथ। वी हैव टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स, राइट? सो कैन यू गाइस टेल मी व्हिच वन, U4 कौन सा वाला टी सेल होगा और V4 कौन सा वाला टी सेल होगा? टी हेल्पर सेल्स रिलीज साइटोकाइंस। व्हाई डू टी हेल्पर सेल्स रिलीज साइटोकाइंस? क्योंकि आपके पास जो साइटोकाइंस हैं, अगर हमारे पास नॉन कैंसरस या नॉन वायरल एंटीजन है, तो टी हेल्पर सेल्स वुड स्टिम्युलेट योर बी सेल्स। और हमारे पास क्या कहते हैं, अगर वायरल सेल है या कैंसरस सेल है, तो टी हेल्पर सेल्स वुड स्टिम्युलेट द टी किलर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का बेसिकली काम होता है, या तो वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, आपके सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी किलर सेल वाले मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। सो जो साइटोकाइंस होते हैं ना, वो बी सेल्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं, वो टी किलर सेल्स को भी ट्रिगर कर सकता है। और साइटोकाइंस पे कौन रिलीज कर रहा होता है, टी हेल्पर सेल रिलीज कर रहा होता है। So U4 is a T helper cell and V4 is a T killer cell. Is this clear? Is it still confusing or does this make sense? Any questions, Khatija, Laima, Anil? Okay. U4 and V4 are types of active T lymphocytes. State the names given to these types of T lymphocytes. So U4 is your T helper cell and V4 is your T killer cell. Now, describe the roles of cells U4 and V4 in a primary immune response. Now we've identified that our U4 is your T helper cell and V4 is your T killer cell. Now we would simply mention the roles of these two. 2 points हम U4 के लिए दे देंगे, 2 points हम V4 के लिए दे देंगे. So U4 is a T helper cell which releases cytokines to stimulate the B cells and T killer cells to carry out either humoral or cell-mediated immune response. Now, if we talk about V4, you would say V4 is a T killer cell which binds to infected cells and release
toxic substances such as hydrogen peroxide and interferons, leading to the lysis of infected cells. Polio is a highly infectious viral disease. The virus infects the nervous system of humans. The disease can cause total paralysis within hours and can be fatal. The Global Polio Eradication Initiative was started in 1988 by the World Health Organization in 2022. Polio had been successfully eradicated from most of the world. However, cases of the disease have been recorded in some countries. Discuss the steps that must be taken by health authorities during a vaccination program if an infectious disease such as polio is to be eradicated from the whole world. Now, all of us have survived the कोविड 19 वायरस राइट और हमारे पास ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हुआ था तो हमारे पास ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर हमने करवाना है तो हमारे पास सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है इट शुड बी एक्सेसिबल अराउंड द ग्लोब जैसे कि कोविड के टाइम पे हमारे पास थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू आउट द ग्लोब जो पॉपुलेशन थी उनको वैक्सीनेट करवाया गया था बट विदाउट वैक्सीनेशन यू कुडंट हैव अटेंडेड योर स्कूल्स पीपल कुडंट हैव return back to their jobs they couldn't travel without a vaccination certificate so if you want to ensure कि globally एक वायरस जो है वो population से खत्म हो जाए तो आपने population को cross the globe accessibility to the vaccine देनी होती है फिर I don't know how many of you are from Pakistan but in Pakistan it was basically the vaccine was free of cost आपको पे नहीं करना था उस वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप क्या कहते हैं आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपने शो करना था एंड यू वुड गेट द वैक्सीनेशन सो वैक्सीनेशन ना सिर्फ ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए बल्कि वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए या फिर चीप होनी चाहिए ठीक है हमारे पास क्या कहते हैं अ गुड वैक्सीनेशन इफ यू वांट कि आपके पास लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रहे तो आपको बूस्टर्स लगते हैं सो इवन द कोविड वैक्सीन हैड टू डोजेस आपने पहले डोज लगवानी थी जो आपकी फर्स्ट डोज होनी थी एंड 20 डेज बाद या 30 डेज बाद आपको एक बूस्टर वैक्सीन लगवानी थी ठीक है और हमारे पास क्या कहते हैं टू इंश्योर कि सब लोग आपकी वैक्सीन ले रहे हो आप ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लो दैट विदाउट taking a vaccine you cannot attend your schools and colleges तो सारे वो precautionary measures जो हमने during COVID देखे थे we can easily write them down vaccination should be available globally it should be the government's responsibility to ensure that the vaccination program is free of cost maximum population should be vaccinated to obtain herd immunity booster doses for long-term effective immunity. Any questions about this? Um, yeah, that's the last question, and we're done for the day. Biofuels contain alcohols that are produced by the fermentation of sugars derived from crop waste. This waste contains cellulose and other organic compounds and cell walls.
Scientists investigated the production of sugars from crop waste for biofuel production. Sure, Alana, you can have a look. Neil, I'll answer that question of yours just once we're done with these two questions. फिर मैं आपको डिटेल में इसका जवाब दे देती हूँ, क्या? अच्छा जी. Scientists investigated the production of sugars from crop waste for biofuel production. The scientists discovered that a strain of the fungus Penicillium citrinum, isolated from soil, was a good source of three different extracellular enzymes, MNO. These enzymes break polysaccharides in cell walls. The scientists cultured this fungus in a liquid medium containing cell wall material. Samples of the liquid were taken, and the three enzymes were separated from the medium. Each enzyme was placed in a reaction mixture with an appropriate substrate. The activity of each enzyme was determined to give a measurement of the quantity of enzyme produced by the particular fungus. Optimum conditions for each enzyme were used to obtain the results in table 4.1. The conditions were different for each enzyme. The scientists carried out further research so that a solution containing the three enzymes could be used for the most efficient production of sugars from crop waste. Suggest what the scientists needed to find out in their research. Now, what's happening over here? हमारे पास बायोफ्यूल्स में क्या होता है कि हमारे पास बायोफ्यूल्स जो हैं they basically contain alcohols और वो alcohol कैसे आ रहे होते हैं from the fermentation of sugars derived from crop waste. आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि हम क्या कहते हैं यीस्ट की एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं जिसके थ्रू हमारे पास इथेनॉल प्रोडक्शन होती है. यीस्ट में एग्जाइमेज एंजाइम होती है जिसके थ्रू हम ग्लूकोज सोल्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्कोहल. बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं क्रॉप वेस्ट में एंड स्पेसिफिकली जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल्स में, उन शुगर्स के थ्रू हम क्या कहते हैं अल्कोहल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं या बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ये जो साइंटिस्ट हैं ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स है फ्रॉम क्रॉप वेस्ट वो किस तरह से यूटिलाइज हो सकती है टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल. जिसके लिए उन्होंने डिस्कवर किया कि एक पर्टिकुलर फंगस होता है, अगर हम उसको आइसोलेट कर दें फ्रॉम सॉइल तो फंगस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज करता है. तीन डिफरेंट यूनिक एंजाइम्स का उनको पता चलता है, एम एन एंड ओ. और ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली आपका जो सेल वॉल में ऑर्गेनिक मटेरियल या पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं. साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मीडियम में हमारे क्या कहती हैं फंगस को कल्चर किया विद द सेल वॉल मटेरियल. तो हमारे पास ये मीडियम है, इसमें हमारे पास क्रॉप वेस्ट है या सेल वॉल मटेरियल है प्लस हमारे पास फंगस है. Samples of the liquid were taken and the three enzymes were separated from the medium. हमारे पास हमने इसके क्या कहते हैं तीन सैंपल्स बनाए और हर सैंपल में हमने एक एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा दी. उसके बाद हमने क्या कहते हैं इन एंजाइम्स को उनके सबस्ट्रेट से इंट्रोड्यूस करवाया और इन तीनों एंजाइम की हमने ऑप्टिमम कंडीशंस रखी और इनकी क्या कहते हैं मैक्सिमम एक्टिविटी या आर्बिट्री यूनिट्स में हमने मेजर कर ली. The scientists carried out further research so that a solution containing the three enzymes could be used for the most efficient production of sugars from crop waste. Suggest what scientists needed to find out in their research. हमारे पास क्या कहती हैं what they're trying to ask us is कि अगर हमें इन एंजाइम्स को यूज करते हुए सक्सेसफुली बायोफ्यूल्स बनाने हैं तो हमारे पास अगर हम तीनों एंजाइम को एक साथ यूज कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अस एंजाइम मिक्सचर है, तो उस एंजाइम मिक्सचर में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए या इंश्योर करनी चाहिए कि हम सक्सेसफुली बायोफ्यूल्स इन तीनों एंजाइम से इकट्ठे प्रोड्यूस करवा सकें. ठीक है, हमारे पास किसी भी एंजाइम एक्टिविटी के लिए किसी भी एंजाइम एक्टिविटी की बेस्ट प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हर एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है. इफ वी डू नॉट नो कि कौन सी एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है तो हम सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स नहीं करवा सकते. हमारे पास जो क्रॉप वेस्ट है उसमें लेट से 5 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हमें पहले तो ये इंश्योर करना है कि कौन सी क्रॉप वेस्ट किस एंजाइम के लिए बेस्ट है, कौन सी क्रॉप वेस्ट के पास एंजाइम्स के मैक्सिमम सबस्ट्रेट प्रेजेंट है. सो सबसे पहले
What we have to do, find which crop waste has maximum substrate for the enzymes. हमारे पास कैन यू गाइस टेल मी बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी? हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एंजाइम्स के बारे में टू इंश्योर कि हम बेस्ट तरीके से एंजाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस ले रहे हैं? व्हाट फैक्टर्स वुड अफेक्ट टेम्परेचर एंड पीएच? सो वी शुड नो कि हमारे पास हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ठीक है? सो वी वुड से each enzyme's optimum pH and optimum temperature सॉरी हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो हमें ये देखना है कॉम्बिनेशन का क्या ऑप्टिमम पीएच है. फाइंड द ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर ईच एंजाइम इन द मिक्सचर. ओके, हमारे पास क्या कहते हैं इमोबिलाइज एंजाइम्स हमने पढ़ी है. क्या इमोबिलाइज एंजाइम्स यूज करने से हमें कोई बेनिफिट हो सकता है इन दिस केस सिनेरियो? नाउ सी अगर हम इस पार्ट को पढ़ें, the scientists cultured the fungus in a liquid medium containing cellular materials. Samples of the liquid were taken and the three enzymes were separated from the medium. हम बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर फंगस फ्रॉम ओ लेवल्स, बट फंगस के लिए आपको याद होगा कि जो फंगाई होते हैं दे बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं. यानी कि जब उनके सराउंडिंग में उनका खाना प्रेजेंट होता है, वो उस सराउंडिंग में अपनी एंजाइम्स रिलीज करता है. डू यू गाइज रिमेम्बर दिस फ्रॉम ओ लेवल्स, और डू यू गाइज हैव दिस कॉन्सेप्ट कि जो फंगस है उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करते हैं कि जब उनका फूड उनकी सराउंडिंग में अवेलेबल होगा वो अपनी सराउंडिंग में एक्स्ट्रा सेल्यूलरली एंजाइम्स रिलीज करता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कल्चरिंग द फंगस विद द सेल वॉल मटेरियल, क्योंकि सेल वॉल मटेरियल पे ये एंजाइम्स एक्ट करती हैं. सो ये रिलीज ही तब होंगे जब फंगस उस मटेरियल के साथ एक्सपोज्ड होगा. अब हमें क्या कहते हैं इन तीनों एंजाइम्स को सेपरेट करना है, मीडियम से अलग करना है. नाउ इफ यू गाइस रिमेम्बर फ्रॉम क्या कहते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स वाली बात, इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स को इन कंपैरिजन टू डिसॉल्व्ड एंजाइम सेपरेट करना एक मीडियम से आसान होता है या मुश्किल होता है? Is the separation of immobilized enzyme from a solution or a liquid easier or different? It's easier. तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम एंजाइम्स को इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंजाइम टू प्रोड्यूस अल्कोहल, अगर हम इमोबिलाइज कर दें इन एंजाइम्स को वंस वी एक्सट्रैक्टेड देम, तो हमारे पास क्या कहते हैं it would be easier to use those enzymes over and over again. So we can say if each of the enzyme is immobilized, it would be easier and more efficient to reuse it. And हमारे पास क्या कहते हैं, does enzyme concentration also have an effect on the maximum activity of an enzyme? एक तो हमने सबस्ट्रेट की बात कर ली, बट क्या हमारे पास अगर हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन फिगर आउट कर लें कि किस एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होती है, तब भी हमारे पास क्या कहती है जो रिसर्च है वो सपोर्ट हो जाएगी. फाइंड मैक्सिमम
concentration of enzyme required for max enzyme activity. Students investigated the composition of the cell wall of leaf cells of thale cress. The students began by isolating the cell wall components from the rest of the cell material. The student used enzymes extracted from a fungal pathogen of A. thaliana to hydrolyze the cell wall components to smaller molecules. The students prepared a reaction mixture containing cell wall components and the enzymes. So ये हमारे पास substrate था, ये enzyme थी. After 24 hours, they separated and identified the smaller molecules found in the reaction mixture. Four types of molecules were identified: short chains of beta glucose, peptides, and amino acids. Explain the presence of these molecules in the reaction mixture after 24 hours of hydrolysis. हमारे पास जो cellulose है, that is basically present in सेल वॉल. सेल्यूलोज जो है उसका मोनोमर क्या होता है? उसका मोनोमर होता है बीटा ग्लूकोज. तो हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज है, जो हमें सेपरेट बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, द सेल्यूलोज इज ब्रोकन डाउन फुल्ली टू बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स एज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज. हमारे पास क्या कहते हैं, जो शॉर्ट चेन्स ऑफ बीटा ग्लूकोज है, these are basically those chains which are not completely broken down but they would further break down अगर हम थोड़ी देर और hydrolysis होने दें. Now, how would you explain the presence of peptides and amino acids? Can we say कि हमारे पास अगर मिक्सचर में पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिक्सचर प्रिपेयर किया गया था सेल वॉल कंपोनेंट्स का, उस मिक्सचर में खाली सेल्यूलोज नहीं था, खाली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, बल्कि दिस पर्टिकुलर मिक्सचर कंटेन्ड प्रोटीन्स एज वेल. कैन वी से दैट? कैन वी इन्फर दैट? No, we do not have to say it's a peptidoglycan cell wall because peptidoglycan cell wall कहाँ पे present होती है? हमारे पास उसमें क्या कहते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. हमारे पास बेसिकली वी डोंट स्टडी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल वॉल, हम खाली सेल्यूलोज की हद तक पढ़ते हैं. However, हमारे पास क्या कहते हैं, there are certain other molecules present in the cell wall as well. And these molecules basically help in the binding of our total structure. तो हमारे पास we do not know, as a part of our syllabus हमने नहीं पढ़ा हुआ कि कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारी प्लांट सेल वॉल में. However, वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि how would we explain the presence of these molecules in the cell wall mixture? So we would say that apart from cellulose, the mixture that the students made contained proteins, and therefore the proteins were hydrolyzed into peptides and अमीनो एसिड. सो वी वुड से कि उस मिक्सचर में डेफिनेटली प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, तभी हमारे पास पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स हैं, बिकॉज अदरवाइज पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते ही नहीं 24 आवर्स के बाद. डज दिस मेक सेंस? So although we do not know if cell wall consists of proteins or not, लेकिन जो solution इन students ने prepare की होगी during their investigation, उस solution में proteins थे, तभी हमारे पास peptides and amino acids present है. So we would say cellulose and proteins are polymers which would be present in the cell wall the complete hydrolysis of cellulose produced beta glucose monomers and partial hydrolysis produced short chains of beta glucose. The complete hydrolysis of proteins
produced amino acids, whereas partial hydrolysis produced peptides. Okay, so that's it for this paper.